Hi, welcome to my YouTube channel. I am Chittaranjan Das. Today we read about the nomenclature of benzene ring and their derivative. Benzene ring and their relative या derivative. Okay, benzene ring and their derivative are called what? Which is called both commonly aromatic compound. Aromatic compound. Okay, benzene ring ଆଉ तार डेरिवेटिव को हमें कम्बाइनली कौन कहूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, नॉन बंजेड एरोमेटिक कंपाउंड भी अच्छी बट वी स्पेशली फोकस ऑन द बेंजीन रिंग एंड देयर डेरिवेटिव. व्हाट डू यू मीन बाय बेंजीन? बेंजीन रो अर्थ कौन? बेंजीन मीन्स इट इज ए साइक्लिक, इट इज ऑल्सो ए साइक्लिक विथ 6 कार्बन, साइक्लिक with 6 carbon. Each carbon contain 1 hydrogen. Each carbon contain 1 hydrogen and it contain alternative double bond, means this position or this position. Formula is C6H6. अरे formula होची कौन? C6H6 mean it is a cyclic compound with 6 carbon, cyclic compound with 6 carbon having alternative double bond. Then it can be written as it is a resonance structure. Hydrogen do not require represent, hydrogen को represent करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं. Okay, here is double bond here and here. Okay, 80 अच्छी जब हम तार जस्ट ताकू डिलोकालाइज कर दो माने ताकू मूव कर दबा. जदि ए डबल बॉन्ड एठी के पळे आसीबो मींस यू नो दैट कार्बन कंटेन 4 बॉन्ड 1 2 3 4. जदि ए बॉन्ड एठी के शिफ्ट करी आछू देन ये तो कार्बन 5टा बॉन्ड हो जिवो ना. सो ये दिस कार्बन बॉन्ड आल्सो शिफ्ट टू दिस मीन दिस इज आल्सो बेंजीन. दिस इज आल्सो बेंजीन मीन दैट इज द कार्बन हाइड्रोकार्बन ऑफ 6 carbon in closed chain containing alternative double bond. ओके, यार रिजोनेंस हाइब्रिड ये दुटार आम रखी पारिबु जेटा कि वेरी फेमस. आम ये तुलना रे ये बेंजीन को आम बहुत जानिचु. ओके, दैट इज द रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू थिंग्स. जस्ट वी गिव द that means the double bonds are not localized, are not constant at a same position. The double bond टा कोन गुटे पोजीशन रे कांस्टेंट नहीं, से एमती मूव करूची. सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन. रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन. ओके, दिस इज द resonance hybrid of benzene. So that first we read about the hydrocarbon of benzene. Hydrocarbon of benzene. Hydrocarbon mean what? Only contain carbon and hydrogen. In benzene ring there is no other functional group. जेटी कि आउ किछि भी functional group नहीं, केवल कार्बन अच्छी आउ हाइड्रोजन अच्छी. That is hydrocarbon benzene. Okay, hydrocarbon benzene ring. So that first you know that this is benzene. This is benzene. वे जिते बेले भी नेमिंग करबा को जाउछु इन aromatic compound or benzene, it can used in two way. Means it can be act as a parent chain or it can be act as a side chain. Okay, if any functional group attached to the carbon of benzene ring directly, suppose here is OH attached, here is CHO attached, then that is called
मान दैट इज यूज्ड एज पेरेंट चेन जदि कौन सी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग को डायरेक्टली कनेक्ट करुच्ची तो से आम कौन कहूँ बेंजीन एक्ट एज व्हाट पेरेंट चेन इफ here is benzene, here is CH3 CH2OH mean as functional group attached to that carbon mean this carbon chain, okay, which are not directly connected to benzene ring, and this is called side chain or benzene are used as substituent group. Benzene are used as substituent group. Okay, आम मिथेन से 1H माइनस करने कौन रोला CH3 प्लस H मीन्स बॉन्ड CH3 and this is called methyl. This is called what? Methyl. Okay, then when benzene used as substituent group, then you say that that is benzyl. No. Okay, you use as substituent group mean it is used as phenyl. Okay, used as phenyl. Then you first naming one by one. First, this is benzene. This is benzene. अब इम्पोर्टेंट कथा होचु aromatic compound आईपैक नेम व्यतीत कॉमन नेम रे बहुत फेमस. Maximum question are comes with their common name. Okay, so you have to remember their common name also. Clear? Then you or this is CH3. Then what? Yadi CH3 attached to this benzene ring, here is benzene ring is a parent chain. It is to benzene ring ta uta kona parent chain. Yadi benzene ring ta parent chain hela, then it is their substituent group. Then you say that methyl benzene, one methyl benzene, one methyl benzene, or you can, its common name is toluene. Toluene. Okay, its common name is toluene. Very famous name है ना. या नेम अपेक्षा ए नेम रे बहुत ही फेमस टोलुइन. देन इफ C2H5 that is also substituent group. Benzene is the parent chain, so it named as ethyl benzene. Ethyl benzene. If two methyl group attached to the benzene ring, both are substituent groups and attached to 2 position, so 1,2 dimethyl benzene. Okay, सबुठु इंपोर्टेंट कथा जेतेबेले बेंजीन रे कौनसी गोटे जगह को फंक्शनल ग्रुप अटैच करूची, मीन व्हेन ए फंक्शनल ग्रुप अटैच टू एनी पोजीशन, सपोज अटैच दिस पोजीशन and their next carbon, okay, that is called 2 carbon, next carbon are called ortho position, and next carbon are called ortho पर carbon टाकू meta position. Okay, next carbon para position. Okay, when ortho position, meta position, para position, like that. In this side ortho, meta, para. When जे कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है, that next carbon functional group or any substituent group, the next carbon are called ortho, the next carbon meta, next carbon para. So here is also called, mean as the 2 methyl group attached, its common name is xylene.
that is orthoxylene. Orthoxylene. Suppose CH3 mean metaxylene. कहीं ना ए पोजीशन टा के पर्सन को लगी 2 1 2 3 ओके एटी जदि गोटे रहिला देन नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट दिस इज ऑर्थो दिस इज मेटा जदि याकू तमे मेन लेनो छो दिस इज ऑर्थो दिस इज मेटा ओके दैट इज ऑल मेटाजाइलिन और यू कैन राइट दैट 1 2 3 1 3 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन ओके if like this is para position, that is called para, p hyphen xylene. Okay, p xylene or 1,4-dimethyl benzene. 1,4-dimethyl benzene. This is the hydrocarbon, mean only carbon and hydrogen, and they are the benzene ring. Then we discuss about how a benzene ring are substituted a group, act as a substituted group. कहीं हम प्रथमे कहती जे जितेबले भी नेमिंग करूचु बेंजीन टा मे बी पेरेंट चेन हो पारे किंबा से मे बी सब्स्टिट्यूएट ग्रुप रूपे यूज हो पारे, मे बी पेरेंट चेन मे बी सब्स्टिट्यूएट ग्रुप रूपे यूज हो पारे. ओके okay you see that when benzene, this is benzene, if one hydrogen remove and act as a substituent group the another parent chain एतरु गोटे हाइड्रोजन रिमूव हो गला एवं that is only this is ready to attach to another principal chain and it is used as substituent group, then it is called phenyl. It is called phenyl. Suppose a benzene ring contain methyl group mean toluene and the hydrogen of this carbon removed and attached to another principal chain. तो एवटू जदि गोटे हाइड्रोजन भारी जाउची एवं ये जदि प्रिंसिपल चेन को अटैच करूची सपोज CH3 CH like that CH2OH અને એથી પ્રિન્સિપલ ચેન હલા એટા સબસ્ટિટ્યુએન્ટ ગ્રુપ હલા એટા તો સબસ્ટિટ્યુએન્ટ ગ્રુપ રે પુણી ब्रांच बाहरी जेटा जेमती कॉम्प्लेक्स ब्रांच बाहरतला ओके जदि एटा रहउची ताको कॉमनली हमें कहि दोचे ऑर्थोटोलाइल लाइक दैट para toluene this is meta this is para ओके जदि ए पोजीशन रे लागुची मेटा ए पोजीशन रे लागुची para toluene then we say about when a benzene ring attached to carbon or methyl group that is toluene जदि एटू हाइड्रोजन रिमूव है कि कौन से हाइड्रोजन लागू अल्कोहल लागू रिमूव फ्रॉम दैट हाइड्रोजन ओके ए कार्बन रु हाइड्रोजन रिमूव हो तो कौन सी बेंजीन रिंग रु रिमूव नहीं मींस बेंजीन रिंग आर अनसेट ओनली CH2 bond that is called benzyl तो मैं एटी फिनाइल टाको भाबो एटी फिनाइल बेंजीन गोटे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रूप अटैच होला दैट इज बेंजाइल नो जदि बेंजीन रे थिबा कार्बन रु हाइड्रोजन जाय कि से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रूप यूज हेची देन दैट इज कॉल्ड व्हाट बेंजाइल सपोज CH2Cl that is called benzyl chloride okay means the halogen attached to this carbon
by removing hydrogen from this carbon. एटी तीनटा का हाइड्रोजन थिला एटु गुटा हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन अटैच करछि, so that it is named as benzyl. It is named as benzyl. Like that, यदि 2 hydrogen replace, okay, and attached to 2 other functional group, then that is called benzal. That is called what? Benzal. If 3 hydrogen removed from this methyl group attached to the benzene ring, जदि एटू 3टा जाक हाइड्रोजन अटैच है कि 3टा सेपरेट ग्रुप को कंटेन करूची कि सेम ग्रुप को कंटेन करूची, दैट इज कॉल्ड बेंजो. ओके, this is benzene, 1 hydrogen removed, then that is called phenyl and attached to other. This is toluene, toluene ru गुटे हाइड्रोजन रिमूव होला फ्रॉम बेंजीन रिंग रू, that is orthotoluene. यदि para पक्षनु लला मेटा पक्षनु मेटाटोलाइल, like that paratoluene. Here is यदि से toluene रू, toluene मीन मिथाइल ग्रुप रे थिबा हाइड्रोजन को रिप्लेस करछु. If 1 replace, that is called benzyl. If 2 replace, 2 hydrogen replace, benzal. If 3 hydrogen replace, that is called benzo. Okay, this is the most important part in the naming position. Then we go to the naming of organic compound or benzene ring compound which contain functional group. Which contain functional group. First, halogen. First we naming halogen. Okay, if halogen attached to the benzene ring, यदि halogen benzene ring को attach होची, then how can you naming that compound? तक compound को हमें केमती naming करिबा. Suppose here is benzene and 1 halogen attached chlorine, that is very simple. Okay, 1 position को attach होची, 1 may or may not be right, कना 1 लोकांट रे किंती स्पेसिफाई करिबा कंपल्सरी नाही. 1 क्लोरो or only chlorobenzene, chlorobenzene. Okay, chlorobenzene. If then 1 2 3 गोटे क्लोरीन अटैच है 1 को, गोटे क्लोरीन अटैच है 3 को, then this is called 1 3 dichlorobenzene. 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 Suppose CH3Br, CH3Br. Suppose Br attached to this, then 1 2 3 4, यदि एंटी क्लॉकवाइज रे भी आछे 1 2 3 4. ओके, देन व्हिच वन को लागला केडगी 1 पोजीशन को, आउट लागला केडगी 4 पोजीशन को, एंड दिस इज द toluene. This total is famous as toluene. Okay, so as it toluene, they do not count from this side, only you direct count from 1. This mean para position, para brommo, or for you can also write for brommo or para brommo toluene. Para brommo toluene. If here is chlorine, here is bromine, then 1 2 3 4, 1 2 2 3 4. तो 1 पोजीशन गोटे 4 पोजीशन गोटे, व्हिच वन इज नेमिंग फास्ट. जदि आम एपटू जाऊे ब्रोमीन फ्रॉम कौन लगला 4 पोजीशन, जदि ब्रोमीन पाखु काउंट आरंभ करबा 1 2 3 4, देन क्लोरीन लगुच 4 पोजीशन, बोथ आर इन 4 पोजीशन. सो यू गिव द प्रायोरिटी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो एठू 1 2 काउंट करिवो, नॉट एठू 1 2 काउंट करिवो नाही, फॉर ब्रोमो लिखिबो नाही. 1 2 3 4, 1 ब्रोमो और ब्रोमो, 4 क्लोरो बेंजीन. ओके, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन. If suppose here is chlorine, here is bromine,
then you start from bromine alphabetically 1 2, then 2 chloro, sorry, first you write the alphabetical first, 1 bromo, 2 chloro benzene. Okay, mean ଯେତେବେଳେ halogen attach होची तार prefix होची कौन halo, if chlorine then chloro, if bromine then bromo, if iodine then iodo, if fluorine then fluoro. Okay, then you like that यदि 1 attach ହେଲା 2 attach ହେଲା 1 toluene से तो attach ହେଲା कने एटा गुटे तो complete हाइड्रोकार्बन से गुटे हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोजन attach ହେଲା 2 हाइड्रोजन attach ହେଲା पुनी काउंट करिवो यदि if 2 halogens attach then you starting from alphabetically order, then you go to naming of benzene ring compound which contain alcohol as a functional group. Okay, यदि benzene ring रे alcohol लागुची तो आमे ताको केमती नेमिंग करिबा. Okay, alcohol, यदि if alcohol attached to the benzene ring, अल्कोहल अटैच है यदि अल्कोहल अटैच होची यदि हमको आइपाक्स रोल ले जाउचे कौन होची here is benzene, benzene E drop due to all, that is 1 all. Okay, that is 1 all. Benzene parent chain, alcohol is the suffix all, that is the role of the IPAC naming. किंतु इटा totally भूल कहना IPAC चेंज कर दीजिए. ओके, ये रोल को चेंज. इट इज कॉमनली फेमस एज फिनॉल. Commonly famous as phenol. It is also accepted by IPAC system. Or you can write that the hydroxybenzene. Okay, 1 hydroxybenzene. Hydroxybenzene, but it popularly known as phenol. Okay, when alcohol group attached to benzene ring, that is called phenol. Clear? That is called what? Phenol. If CH2H mean that is the side chain of the alcohol. This is the principal chain. This is principal chain, and benzene are used as substituent group. It is benzene कौन गला substituent. So that 1 phenyl methanol. Okay, 1 phenyl methanol. यदि बेंजीन रिंग को बहुत अल्कोहल लगुची एज वेल एज ए मिथाइल ग्रुप. ओके, देन दिस इज popularly known as toluene, and this is hydroxy. So ortho hydroxy, ortho or 2 hydroxy, 1 2 or next carbon are known as ortho position, ortho hydroxy benzene, or common name is orthocresol. यदि बेंजीन रिंग को here is CH3, here is OH. So this is toluene and this attached to meta position, meta hydroxy toluene or metacresol. If a benzene ring attached to 2 alcohol group, here is OH, here is also OH. Okay, then you write that IPAC name just as their rule. Benzene locant is 1 to diol. Okay, benzene 1 to diol. Our common name is catechol, but it is not popularly famous. Benzene 1 to diol. If attached to this position, then benzene 1,3 diol. Okay, benzene 1,3 diol. Then we go to aldehyde group.
Okay, benzene ring containing aldehyde group. Aldehyde group mean if CHO attach, then you say that this is benzene parent chain, this is aldehyde group for suffix Al, then you write that benzene 1L, but this is wrong. Okay, because it is rejected by their IPAC system. Can IPAC system se jaha ko koi me taha manno. Okay, that beside the rule how to go naming of organic compound, last recommendation thila 93 re taको change kara hai setri. So it is known as benzaldehyde. Benzaldehyde. Okay, benzaldehyde. आहरी गोटे नुआ कथा, वेरी इंपोर्टेंट कथा जेटा कि 93 रिकमेंडेशन कथा, जे जदि जे फंक्शनल ग्रुप रे कार्बन अच्छी, जे फंक्शनल ग्रुप रे कार्बन अच्छी, इफ दैट इज नॉट इंक्लूड द पेरेंट चेन, जदि सेटा से पेरेंट चेन भितर इंक्लूड नहीं, then it is used as carbo. It is used as carbo. So you write also benzene carbaldehyde. Carbaldehyde. Okay. Then question is, sir, this is if the IPAC name comes, then this one is correct. If this one is correct. Okay. Both are correct. It is dita को correct अच्छी. तो यदि ऑप्शन में ये अच्छी ये करेक्ट, यदि ऑप्शन में ये अच्छी ये भी करेक्ट. सर यदि दीटा एक ऑप्शन रे अच्छी, देन दिस इज द मोर करेक्ट बिकॉज दिस इज द लास्ट रिकमेंडेशन. एटा कहीं की चेंज है ही नहीं कना यार ओल्ड सिस्टम रे ये बहुत ही पॉपुलरली फेमस हैला जाको चेंज करा जाय नहीं, बट दिस वन इज द मोर करेक्ट. एटा को हमें अधिक ठीक बोली भाबियो हैला कना ये 93 रिकमेंडेशन अनुसार कोन ना जदी फंक्शनल ग्रुप भितर थिबा कार्बन काउंट ओनली एज ए प्रिंसिपल चेन, देन दैट इज कॉल्ड कार्बाल्डिहाइड. ओके, लाइक दैट. सपोज मल्टी फंक्शनल ग्रुप अटैच, हियर इज CHO, हियर इज OH. ओके, देन दिस इज द मेन चेन benzaldehyde, here is prefix. So 1 2 hydroxy benzaldehyde. ओके, और बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी कर पारियो. बेंजाल्डिहाइड. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज साल्सिलडिहाइड. कॉमन नेम, बहुत फेमस है नेम रे, साल्सिलडिहाइड. ओके, this is all about the what aldehyde. Then we go to ketone. जदि ketone attach है means here is CH3. mean according to the IPAC rule there is two alkyl group, one is this and another one is this. This is ketone. Suppose CH3 C double bond O CH3. Here is one alkyl group, here is one alkyl group, dimethyl ketone or prop AN2ONE. ओके, कॉमन नेम थिला टू अल्काइल. तो एठी सेमती कॉमन नेम आस जीवो कोन, एपटे मिथाइल रहिछि एपटे फिनाइल रहिछि. ओके, सो वन मिथाइल फिनाइल केटोन, मिथाइल फिनाइल ketone. Okay, due to their two separate alkyl group, methyl phenyl ketone. किंतु जब हमें ताको पेरेंट चेन रूप में नबा, IPAC रूल ले नबा, ये बेंजीन, then this is 1, this is 2, mean 2 phenyl. Okay, this is due to substituent group, कहीं फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से तो ऑक्सीजन रखी. Okay, this is due to substituent group. So 2 phenyl, what root is eth ANONE. ओके, तो ये दीटा नाम छोड़ा सी आहुरी गुटे नेम रे भारी पॉपुलर, दैट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन. दैट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन. दैट इज कॉल्ड
acetophenone. Okay, देखो हम कौन कहूँ acetophenone. Suppose here is a benzene ring and here is carbon double bond O. Another benzene ring will also attach C6H5. Yeah, benzene ring. That is called diphenyl ketone. Diphenyl ketone or benzophenone. Benzophenone or diphenyl ketone. Okay, then we go about this. Then we go to carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay, carboxylic acid. Go to carboxylic acid. Mean when carboxylic acid attached to the benzene ring. COOH. That is oic acid. So you write that benzoic acid. Benzoic acid. Okay, it is benzoic acid. जदि आम से लास्ट रेकमेंडेशन को जीवा तो एथिरे थिबा कार्बन भी ए चेन भितरे काउंट हो नाही. प्रिंसिपल चेन रे जे कार्बन बेंजीन रिंग रे जे कार्बन अछि से ए कार्बन सेतरे काउंट नो. सो यूज कार्बो. सो बेंजीन carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay, like that. If COOH, here is OH, multifunctional group, means 1 2 1 2 2 hydroxy 2 hydroxy benzoic acid. Okay, 2 hydroxy benzoic acid or salicylic acid. सेठी साल्सिल डिहाइड थिला, पॉपुलरली नोन एज, बहुत फेमस है नाम रे, साल्सिलिक एसिड. ओके, साल्सिलिक एसिड. देन वी रीड अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड रु डेरिवेटिव कंपाउंड गुड हम पढ़ू. बुझी तो डेरिवेटिव के थिला जे हम जानथिलु जे RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OX एसिड हालाइड, RC डबल बॉन्ड O mean OH replaced and halogen attached, that is called acid halide. If NH2, that is acid amide. RC double bond OR ester. RC double bond OC double bond OR, that is acid anhydride. Acid anhydride. Okay, then we read about this. One is acid halide, acid amide, then ester, then acid anhydride, then acid anhydrides. So first the acid halide, naming acid halide. Acid halide. Acid halide means if benzene ring contain COCl. Benzene ring contain COCl. Then you know that for acid halide, that is oil. Oil halide means if chlorine then chloride, if bromine then bromide, chloride. If iodine then iodide. Then here is the benzene oil. Can I ये ड्रॉप हम आसचु क्लोराइड. ये आम रूल अनुसार ठीक अच्छे. तो या भी जब रेकमेंडेशन अनुसार न्यू रेकमेंडेशन अनुसार करवा तो ये जो कार्बन ये प्रिंसिपल चेन रे इंक्लूड होनी. ओके, देन यू यूज बेंजीन जेहेतु हम यूज करवा कार्बोक्सिल क्लोराइड. ओके, बोथ आर द आइपाक नेम हैला, बोथ आर करेक्ट. किंतु यदि दीटा भितर कंपेयर करा जिवो
that is more correct because it is the last recommendation. Okay, this is acid chloride. जदि आम एक CONH2 लगाऊे मीन amide group CONH2, that is you know that for NH2 amide बोले prefix तार suffix कौन amide. Okay, so benzene E should drop due to A, जेहेतु एटी A आसुचु एटी E यूज होबो नाही, डबल बावल यूज होबो नाही, then amide बेंजीन amide. ओके, तो जदि आम सेम यही अनुसार जीवा लास्ट रिकमेंडेशन अनुसार जीवा, दैट इज बेंजीन कार्बोक्सिल amide. ओके, बिकॉज दिस कार्बन also do not involve the parent chain. Then we read about the ester. Ester means C double bond O CH3. ओके, C double bond O CH3. तो ईस्टर पाई आलिफेटिक रे कौन थला अल्काइल अल्कानोएट. ओके, alkyl alkanoate because this is R C double bond O R, two alkyl group. For one alkyl group, that is alkyl which contains COO, that is called alkanoate. Okay, methanoate, benzoate, like that. Here is methyl and here is benzene plus OAT mean benzoate. Okay, one methyl you have methyl benzoate. If C2H5 ethyl benzoate. Then acid chloride, acid amide, ester. Okay, then we acid anhydride. Go to acid anhydride. Double bond O mean two symmetrical, both alkyl group are same. तो जिते एसिड अनहाइड्राइड कथा उठला आर सी डबल बॉन्ड ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इट इज टू अल्काइल ग्रुप. जदि इफ सेम देन वन वर्ड रूट इज यूज, इफ डिफरेंट देन टू वर्ड रूट इज यूज. जदि सेम अच्छी सिमेट्रिकल अच्छी तो आम गोटे वर्ड रूट रे नेमिंग करबा, जदि डिफरेंट अच्छी तो डिफरेंट वर्ड रूट रे नेमिंग करबा. सो इट इज कॉल्ड लाइक इट इज आल्सो ओइक अनहाइड्राइड. इट्स प्रीफिक्स सफिक्स होची oic anhydride, so that benzoic anhydride. यदि हमको लगते हो C double bond O CH3 एटी मिथाइल बेंजोइक एनहाइड्राइड कहना एटा अनसिमेट्रिक एपटे मिथाइल रहला एपटे फिनाइल रहला. सो मिथाइल बेंजोइक anhydride. Okay, this is all about the carboxylic acid and their derivative. Carboxylic acid and their derivative. On next class we discuss about the amine, benzene sulfonic acid, etc. Okay, thank you.